Hello friends, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to do our third NCERT test, that is of polity. NCERT की history and geography we have already covered. ये मैंने complete करा दी है from class 6 से 12th. इसके सारे MCQs completed हैं and इसकी मैंने एक मेगा वीडियो या एक बोल दें एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है. So you can go and see that video अगर आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी देखनी है तो. Now let us start. आज के इस सेक्शन में we are going to do questions of class 11th polity के. Now let's start with the first question. Consider the following statement regarding the objective of political theory. Political theory क्या है? The political theory are the theories which are related to the politics of the country and which tells us about the political milieu of that country. कहने का मतलब है कि how the politics of that country work, which kind of democracy is there और which kind of autocracy is there. वहां की politics कैसी है, वन पार्टी है, टू पार्टी पॉलिटिक्स है. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी. The first is the purpose of political theory is to train citizens to think rationally about the political question. Yes. To provide training in assessing the current political events correctly. Yes. Both the statement here are true. C हमारा correct answer. Now, second question is considered regarding the famous book Hind Swaraj. The author of the book is Mahatma Gandhi. Yes, it is true. Also, Hind Swaraj पे ये जान लो कि it was written in the year 1909. और ये कैसे related थी? It was related to Swaraj. Swaraj in India or self independence या full independence, real independence. What does the real independence? इसके ऊपर में गांधी जी ने ये बुक लिखी थी. Hind Swaraj is the autobiography of Mahatma Gandhi. No, it is not. It is about the Swaraj in the country. ऑटोबायोग्राफी जो है महात्मा गांधी की उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. ये तो सुना ही होगा आपने, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. सो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे रॉन्ग है. रियल फ्रीडम हैज बीन डिस्कस्ड इन द हिंद स्वराज. यस, 1 और 3 दोनों यहाँ पे सही है. हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स. ओनली 2 स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर. Third question is freedom is guaranteed in our constitution, yet we have to face new interpretations of it. अब इसको सिर्फ स्टेटमेंट नहीं समझना, इट हैज अ डीप मीनिंग इनसाइड दिस. ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है. सोसाइटी फेसेस न्यू चैलेंज अगेन एंड अगेन. सो दिस इज अ जेनेरिक क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये रीजन तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी हमारा सही है, बस इसकी डेरिवेशन क्या होगी. डेरिवेशन ये होगी कि फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. है, बिल्कुल है. कैसे है, प्रियम्बल में है. कहाँ है देन, फंडामेंटल राइट्स में है. फंडामेंटल राइट्स में भी अगर मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं तो देयर इज आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज राइट टू फ्रीडम, जिसमें 6 तरह के राइट्स दिए गए हैं एंड दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन. वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट is the guarantor of fundamental rights. एंड सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशंस देता है अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज फ्रीडम फेसेस न्यू इंटरप्रिटेशन बार बार. अब इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो 2017 में आई थिंक देयर वाज अ पुट्टा स्वामी केस. पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द राइट टू प्राइवेसी. राइट टू प्राइवेसी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द सिटीजन्स एंड इट इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ. ठीक है, तो टाइम टू टाइम देयर आर इंटरप्रिटेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विच आर देन इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो assertion भी सही है, रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो हमारा 3 का ए इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट communication technology.
In English, people who use the internet are called citizens. No, they are not called the citizens. ठीक है, citizens are the people who reside in that country. Global communication technology is making it easier for the activists to coordinate with each other for the protection of tribal culture or forest around the world. Yes, this is correct. Communication technology has also given the terrorists and criminals the ability to establish their network. Yes, they somehow use this communication technology. Communication technology में अलग अलग चीजें आ जाती हैं, दैट इज सोशल मीडिया, ठीक है, ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, देयर आर वेरियस मीन्स थ्रू विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्क्स. सो इसका हमारा फॉल्स स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो ओनली वन इज राइट. फिफ्थ क्वेश्चन इज whose creation is the major book of political theory, the Republic. The Republic book किसकी है? This is written by Plato, and also Aristotle was student of Plato. ठीक है. एंड इस बुक में क्या बताया गया है? द रिपब्लिक बुक में, इसमें बताया गया है व्हाट इज जस्टिस. जस्टिस के बारे में बताया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम द फियर? अब नेल्सन मंडेला में पता है, बिलोंग टू द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. आंग सान सू की वी नो was an activist of Myanmar. So ये जो book है Freedom, it is written by Aung San Suu Kyi. D is right. Now, seventh question is Swaraj is my birthright and I will have it. Whose statement are this? So the statement were given by the Bal Gangadhar Tilak. ठीक है. Also Gopal Krishna Gokhale was also called political guru of Gandhi. ठीक है. लाला लाजपत राय, he died, अगर इनके बारे में बात करूं तो he died during protest against Simon Commission. ये भी आप ध्यान रखना. एंड बीजी तिलक के बारे में बताऊं, he led a home rule league which was formed in the year 1916. इनके बारे में ये फैक्ट आप याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. महात्मा गांधी रोट हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, कौन सी ईयर में लिखी थी? अभी बताया मैंने, 1909. A free society is one in which a person is able to promote his own interest within restrictions. ठीक है. तो मतलब क्या मिनिमम रेस्ट्रिक्शन होती है? देखो, अगर जीरो रेस्ट्रिक्शंस होंगी ना, ठीक है, जीरो रेस्ट्रिक्शंस होंगी तो इंसान अपनी लिबर्टी का नेगेटिव फायदा उठा सकता है. ठीक है. अभी 4 रेस्ट्रिक्शन, ये तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो गए. मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन में सिटीजन और ए ह्यूमन विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर, क्योंकि इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन के बाद ही मे नॉट बी एबल टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू. बट विथ मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये होता है कि इंसान अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर सकता है, एंड विथ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कम्स सर्टेन राइट्स ऑल्सो, एंड देन राइट्स के साथ देर आर सम ड्यूटीज ऑल्सो. सो मिनिमम रिस्ट्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर. 10th question is Hahn principle is a major theory in the field of political thinking related to the limits of freedom. Who was the proponent of Hahn principle? So Hahn principle के प्रोपोनेंट हैं हमारे स्टुअर्ट मिल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑन लिबर्टी, रामायण रिटोल्ड, द सैटेनिक वर्सेस. ऑथर इनके कौन कौन से हैं? ठीक है. सो ऑन लिबर्टी के ऑथर हैं जॉन स्टुअर्ट मिल. रामायण रिटोल्ड के हैं ऑब्री मेनन, एंड सैटेनिक वर्सेस के हैं सलमान रुश्दी. हमें इनकरेक्टली रॉन्ग वन बताना है यहाँ पे, तो रॉन्ग वन यहाँ पे, 2 रॉन्ग वन मैच. Now, 19th century British political thinker John Stuart Mill has presented a very emotional side of the freedom of thought, expression, and debate
in his famous book on liberty. How many such reasons has he presented in the book whose view seems to be wrong or misleading in today's circumstances? So, 4 इसका correct answer है. What is meant by positive liberty? Positive liberty का क्या मतलब होता है? It is as freedom as expansion of opportunities to express oneself. Who is the producer of the film named Ramayan Retold? This was written by Aubrey Menon. The concept of dash as a political ideal emphasizes the uniqueness in which all human beings, regardless of color, sex, race, or nationality, okay? Concept of what is this concept? So this concept is known as equality. And equality is enshrined in Article 14 of the Constitution, Article 14 to 18. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन बनाता है? वेरी इजी आंसर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. The only meaning of the ideal of equality is that all kinds of difference should be eliminated. और सेकंड इज, अब देखो ऑल आ गया. मैंने आपको जितने भी एमसीक्यूज कराए हैं उसमें मैंने आपको एक चीज बताई है, देयर इज अ कंसेप्ट कि आप एलिमिनेट करो चीजों को. सारा कुछ याद नहीं हो सकता है, ना ही वो पॉसिबल है. तो एलिमिनेट करना सीखो. एलिमिनेट किसको करना है? तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को करना है. एम आई करेक्ट? एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हमें एलिमिनेट कर देना है. यहाँ पे ऑल आ गया. अब मुझे बताओ कि ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस क्या इक्वालिटी से रिमूव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही देख लो. देयर इज आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टेल्स अस अबाउट राइट टू इक्वालिटी. तो क्या इस राइट से हम ये कह सकते हैं कि सारे डिफरेंसेस सोसाइटी के रिमूव हो चुके हैं? नहीं होंगे ना. तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि सोसाइटी एज अ होल इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. इसका ग्राफ ऐसे जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे. इट इज ऑलवेज प्रोग्रेस. कभी कुछ नया फिनोमिनन सोसाइटी में ऐड होता है, कभी रिड्यूस होता है, कभी वो स्टेबल रहता है. सो कोई भी आइडियल इक्वालिटी में सारे डिफरेंसेस आप नहीं. डिफरेंसेस कैन बी लेसन टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. ए हमारा रॉन्ग है, रीजन हमारा करेक्ट है. रीजन देख लेते हैं. इक्वालिटी सिंपली मीन्स द वे वी आर ट्रीटेड एंड द अपॉर्चुनिटी वी गेट should not be determined by birth or social circumstances. Yes, बिल्कुल करेक्ट है. 18 का हमारा डी इज राइट. 17. What type of inequality is indicated by the inequalities that arise among the people due to their different abilities, talent, and their different choices? This is natural inequality. क्योंकि हर किसी में naturally different abilities होती हैं, different types of talents are there. ठीक है, so ये differ करता है. सोशल इनक्वालिटी इज दैट जो सोशल सोसाइटी से बनी है. फॉर एग्जाम्पल, जो इन डिफरेंसेस की वजह से देयर आर सर्टेन कास्ट इन द इंडियन सोसाइटी. ठीक है, एससी एसटीज के साथ जो एट्रोसिटीज ड्यूरिंग फ्यू इयर्स पीछे के टाइम पे जो उनके साथ एट्रोसिटीज हुई हैं, दिस इज अमाउंट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. जेंडर इनइक्वालिटी में आ जाता है फीमेल के अगेंस्ट, मेल फीमेल को इक्वल पे ना देना, ये भी इज अ टाइप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. देयर इज अ स्टीरियोटाइप दैट इज कनेक्टेड टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, वो भी जेंडर इनइक्वालिटी है. एडुकेशनल इनइक्वालिटी क्या है? द riches of the country study in very high ranked institutions whereas the poor people don't even have that right to bare minimum education. इसी वजह से तो बाई 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स. क्या था? राइट टू एजुकेशन था ना, आया था ना 21A में. सो ये इनजस्टिस या इनइक्वालिटीज की वजह है कि देयर इज अ सर्टेन प्रोविजन ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन आवर फंडामेंटल राइट्स. Question number 19. Political equality is certainly an important ingredient for building a just and egalitarian society. And the second statement is political equality is sufficient in itself. No. Political के साथ दो तरह और की इक्वालिटी होती है. There is social equality भी होनी चाहिए to a certain extent. And इसके साथ साथ इकोनॉमिक हमें कोशिश करनी चाहिए कि इकोनॉमिक
इक्वालिटी भी सोसाइटी में हो। दैट इज वाई स्टेटमेंट ट्रू की बात है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ओनली वन इज करेक्ट। नो। हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी हैव पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फिलोसफर अंडरलाइन? अभी बताया मैंने, थ्री टाइप्स। एक तो दिया है पॉलिटिकल, सेकंड वन इज इकोनॉमिक, थर्ड वन इज सोशल। तीन तरह की इक्वालिटी हो गई, अभी बताया मैंने यहाँ पे आपको। Next question. Fill in the blanks with the appropriate word given in the options. Dash is a set of political idea that arose in responsibility to inequalities. This is a concept of socialism. ठीक है, हमारे इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू was the proponent of socialism. ठीक है, तो 21 का हमारा A is right. No. Political philosopher Immanuel Kant belong to? He belonged to Germany. It's an easy question. No, assertion and reason वाला question है. Adherence to the principle of equal treatment may sometimes conflict with giving fair merit to devote to merit. Yes, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका सीधा है कि अगर मैं बेसिक आपको एग्जांपल दूं, तो जो जेंडर कैटेगरी के स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं अबाउट द रिजर्वेशन क्राइटेरिया, इट सूट्स द बेस्ट एग्जांपल। Emphasizing justice as the primary principle for rewarding merit will mean that many marginalized sections of the society will be left deprived in many areas. बिल्कुल, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। Regarding justice, which of the following thinker argue that rational thinking, not morality, inspire us to think impartially in the matter of distribution of benefits and burden in the society? So किसने बोला था ये बोला था जॉन रॉल्स। Disagreements on the issue of distribution and justice are inevitable and beneficial in a democratic society. Yes, correct statement है. Politics is another name for finding a way out between those disagreements. Yes, दोनों statement correct है. False statement हमसे पूछा है. D is the correct answer. 26 देखते हैं. Dash represents those things which people consider important and necessary to live a life, respect and dignity. So rights, क्या? Rights हमारा correct answer. The basic belief behind human rights is that all people are entitled to certain things simply by human beings. बिल्कुल सही आंसर है। रीजन क्या है इसका? द आइडिया हैज बीन यूज्ड टू प्रमोट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन रेस। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को यूज नहीं किया गया है टू प्रमोट इनइक्वालिटीज, बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। Now, the next question is, everything has either a price or dignity. Whatever has a price, something else equivalent to it can also be placed in its place. On the contrary, which is above all prices and which has no equal has dignity. This famous statement regarding rights belong to which thinker? So the correct answer to this question is Immanuel Kant. Who was the political thinker who presented the moral concepts regarding rights? इस क्वेश्चन हमसे पूछा है वो कौन से मोरल पॉलिटिकल थिंकर थे उन्होंने जिन्होंने प्रेजेंट किया था मोरल कंसेप्ट रिगार्डिंग राइट्स? सो इट वाज गिवन बाय मैनुअल कांट। Fill in the blanks with appropriate word given in the option. Right imposed has dash obligation on the state to act in a certain way, has a legal obligation. Which of the following statement regarding rights are correct? Rights tell us what to do. Yes, absolutely. Right tells the which the state do not do. Yes, दोनों statement हमारे सही है. The rights put some kind of restrictions on the state कि state कैसे काम नहीं कर सकता है. Okay, this is a definition of rights for the state. The United Nations has made the Universal Declaration of Human Rights. By which organization of the United Nations was the above announcement made? So it was made by the General Assembly of the United Nations. What is the purpose of United Nations Declaration of the Universal Human Rights? So the first declaration is to lay the foundation of freedom, justice and peace in the world. The second one is to encourage better living standard and social development and to establish the rule of law. The rule of law proponent was given by A.V. Dicey. He was British
and this rule of law is also contained in our Indian constitution. ठीक है? So all of the above is the correct answer. When did the famous French Revolution take place? The French Revolution happened in the year 1789. So हमारा D is the correct answer. Next question is, which of the following statement about the Martin Luther King Jr. is are false? Martin Luther King was a prominent leader in the struggle for the black communities of South Africa. No, not for the South Africa, but United States of America. हमारा पहला statement गलत है. He presented many irrefutable arguments against the segregation laws of whites and black people. Yes, absolutely correct. And he argued that the practice of segregation also reduces the quality of life of white community. Yes, these statement number 2 and statement number 3 is correct. One हमारा false है. हमें क्वेश्चन में false statement पूछा है तो only one is right. Now, consider the assertion and reason. Assertion क्या है? Citizenship is merely a legal concept. We can no, it is not. It is not a legal concept. ठीक है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू राइट्स ऑफ द सिटीजन. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, देर आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज कुछ फॉरेन राइट्स ऐसे हैं, जो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेन पीपल को नहीं मिलते हैं. ठीक है, इफ आई मीन टू बी स्पेसिफिक देन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, Article 19, Article 20, Article 29 and 30. These are some of the rights which are only given to the Indian citizen. That is why citizenship is not merely a legal concept but also have a broader connotations. Okay? It is related to concepts like fundamental rights, equality. So this is the basic idea behind this. Also, the citizenship in India is purely a union the subject of union list. All the laws which are made regarding the citizenship are made by the Parliament of India. Second is citizenship is also closely related to equality and rights. Yes, as I have told you, पहला statement हमारा गलत है, reason उसका correct है. Question 37. Which famous English sociologist has propounded the principle of unanimous formulation of citizenship with broader objectives of equality and rights? So this concept of was given by T.H. Marshall. The Darfur region is often discussed as a global center for refugees. In which of the following countries are Darfur region located? So Darfur region is in Sudan. ठीक है. Question number 39. When did Dalai Lama and his followers come to India as immigrants after suffering from Chinese operation? So the correct answer to this question is 1959. Which level authority has been appointed by the United Nations to investigate and help the problems of refugee at global level? So there is High Commissioner to the United States, United Nations, जो इन problems को deal करता है. In which year did the famous tsunami that wreaked havoc in South Asia occur? This was the year 2004. Question number 42. Nationalism paved the way for establishment of large nation states by unifying many small principalities in 19th century Europe. बिल्कुल करेक्ट बात है. ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी as we see by Otto and Bismarck. Then there was unification of Italy. Main leaders इसमें Mazzini थे, Count Cavour था. So this section I will deal in the world history part. ठीक है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के सेपरेट लेक्चर्स डालूंगा, उसमें मैं ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा. Nationalism in Europe in 20th century contributed to the disintegration of big empires. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है. All nationalism in Europe started with a single theory which was known as rationalism. So then it rose to Renaissance. Renaissance से it spread through all of the Europe. एक और बहुत फेमस प्रोवर्ब है इसके रिगार्डिंग अबाउट द वर्ल्ड हिस्टोरिकल कंसेप्ट. ठीक है, वो ये है कि whenever France coughs या whenever the France sneezes, the whole Europe has cold. जब भी फ्रांस में कुछ होता है तो पूरा यूरोप हिलता है, वहां पूरा यूरोप में उसका इफेक्ट होता है.
As we can see, French Revolution of 1789, it paved the way of nationalism, rationalism in France and whole of the Europe, and उसका impact हर जगह में देखने को मिला. True statement हमें बताना है. Both the one and two statement are true. Now let's move to question 43. By whom the nation is built. Simple question है. Nation is built by an imaginary community. ठीक है, रियल कम्युनिटी नहीं, यानी इमेजिनरी कम्युनिटी होती है. A community that is perfect, near to perfect, and that is dedicated to build a nation. Real community is not the community that builds a nation. It is always the standards we set. जैसे कि आपका जो आप अभी लाइफ में परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, सो आपका इंसान होने का कोई फायदा नहीं. क्योंकि अगर आप अभी जो आपके लाइफ में चल रहा है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ऑलवेज हैव अ गोल इन लाइफ. आपका अगर कोई गोल है जो आपने एस्टिमेट किया है कि ये मुझे करना है, जो आपने टारगेट किया है, दैट इज द पोटेंशियल यू हैव. सो ऑलवेज द पोटेंशियल इज योर, ऑलवेज द पोटेंशियल दैट यू हैव सॉट इज बेस्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ योरसेल्फ. ये चीज ध्यान रखना. सो दिस इज एन इमेजिनरी कम्युनिटी. अगर इंडिविजुअल के सेंस में बोले, तो इट इज दैन इमेजिनरी यू, जो आपका प्रेजेंट यू है, दैट वांट्स टू बी इमेजिनरी यू. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. Question 44. Which model of secularism involves complete non-interference by the state in the matters of religion? So it is the European model. Secularism was adopted in Turkey in the early decades of 20th century. Yes, it was a hot seat of Ottoman Empire. पहले यहाँ पे सेक्युलरिज्म जैसा कुछ था नहीं. अर्लियर डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में, ठीक है, मुस्तफा कमल के एक रेवोल्यूशन के बाद तुर्की में सेक्युलरिज्म आया. Instead of maintaining an ideological distance from the organized religion, it advocated the separation of religion through active interference by the state. Yes, 45 ka A is right. What is the purpose of providing fundamental rights in the constitution of any country? To expand the power of government? No. Limit the power of government? Yes, it is right. The fundamental rights provides a restriction on the state, limiting power of the state. Main goal is to not let a state be all powerful. Okay, that is the main idea behind the fundamental rights. Now, next question. England is a nation without a constitution. See, this point is wrong. England is a state with constitution, but England does not have written constitution. Written constitution England के पास नहीं है. What England has is a oral constitution. ठीक है. Second is England does not have a document which can be called a constitution, but rather has a long series of documents and decisions. Yes, this is correct. ओरल, जिसमें ओरल भी बहुत कुछ है, कुछ रिटन है. सो इट इज नॉट अ रिटन. इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू सी इज एज अ होल. ए हमारा रॉन्ग है, डी हमारा करेक्ट है. डी इज द राइट आंसर. इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बात है ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन प्लान आया था इन द ईयर 1946. कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. द प्रोविंसेस अंडर डायरेक्ट रूल of the British government were to elect 292 members, and the princely state were allotted a minimum of, so they were allotted 93 seats. Now next question. The seats in each provinces of the Constituent Assembly were divided among the three major communities in proportion to their population. Yes, and these three population were Muslims, Sikh and General. ठीक है. The three communities were Muslim, Sikh and Hindus. No, Hindus नहीं. Other one was general community. That is why हमारा A is the right answer. On what basis were the representative of the princely states selected from the Constituent Assembly? So these were elected on the basis of consultation with princely states. जो राजा होते थे princely state के, they elected them. True statement बताना हमें. The members of Indian Constituent Assembly were elected on the basis of universal adult suffrage. This is wrong.
ठीक है. The number of members of the scheduled caste community in Indian Constituent Assembly was 28. Yes, this is right. Congress party has dominance in the Indian Constituent Assembly. Yes, this is right. One is wrong. Two and three is right statement. What is the important provision of the Indian Constitution which was passed unanimously in the Constituent Assembly without any debate? So it was provision related to the universal adult franchise. The quasi-federal form of government in the Indian Constitution has been taken from which of the following country? So this idea was taken from Canada. Next question is 54. मैच करना हमें फ्रांस से हमने क्या लिया था? The principles of liberty, equality and fraternity, which were the hallmarks of the French Revolution. ब्रिटेन से हमने क्या लिया? आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. भैया ए का तो आंसर 4 होगा. डी का हमने देख लिया आंसर 3 हो. आंसर तो इसका बी है. ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? ब्रिटेन से हमने लिया था मेथड ऑफ लॉ मेकिंग एंड देन अमेरिका से क्या लिया था? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. सो बी हमारा राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 55. Which of the following element has not been taken from the British Constitution? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही ली गई थी. ठीक है. उसके बाद रेसिडुअल पावर नो. These were not taken from the British Constitution. Residual power came from the 1935 Act, Government of India Act. ठीक है. या कुछ अंश रेसिडुअल पावर का was taken from the Constitution of Canada. 56. No person shall be deprived of his life or personal liberty except in accordance with the procedure established by law. कौन सा आर्टिकल बताता है ये? This article is article number 21. On which of the following ground restriction cannot be imposed on the fundamental right to religious freedom? तो पब्लिक ऑर्डर के लिए बिल्कुल किया जा सकता है, एथिक्स के लिए भी किया जा सकता है, हेल्थ के लिए भी किया जाता है, बट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता. अगेंस्ट whom is the writ of mandamus issued by the court? Mandamus is issued against a public official. Where has the right been property taken out of the constitution and replaced? So this is under article 300A. 44th amendment act ऐसा एक्ट था जिससे the right to property was excluded and was made a legal right under article 300A. ज्योतिबा फुले के बारे में बताया है. कौन से स्टेट के थे? ही बिलोंग टू महाराष्ट्र. एक फेमस बुक इनके द्वारा लिखी गई was गुलामगिरी. इसका नाम याद रखना बुक का. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. Now, what is not the function of the National Human Rights Commission? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? सबसे पहला तो हियरिंग ऑफ केसेस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स. जुडिशियल पावर नहीं होती है ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास. क्यों नहीं होती है? क्योंकि इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी which was made in the year 1993. Okay. Assertion and reasons पे क्वेश्चन है. The directive principle of state are not enforceable. Yes, correct है. These are not enforceable in court. These are merely the principles that the state should keep in mind while formulating the laws. Second is the framework of the constitution believed that the moral force behind the directive principle would compel the government to take them seriously. Yes, A is the correct answer here. निसेट कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट को बोलते हैं? तो इट इज द इजराइल. चाइना की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन है. Under this, entire country is considered as one constituency and each party given seats in proportion to the votes received in the national elections. बिल्कुल correct है. Under this, the entire country is divided into multi-member constituency and each party releases a list of its candidate for each constituency which contains as many names as the number of candidates to be elected from that constituency. Yes, both the statement are true. The method of proportional representation is also used for the election of President of India, Vice President. तो ये ध्यान रखना. Which of the following functions do not come under the Election Commission of India? Supervising of panchayat elections,
क्यों? क्योंकि दिस इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाना, देन जनरल इलेक्शंस करवाना ऑफ द लोकसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के इलेक्शंस को करवाना इन द स्टेट। पंचायती इलेक्शंस को देखने का काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नॉर्मल टेन्योर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इनका नॉर्मल टेन्योर होता है 6 years और 65 years। In the context of Indian electoral system, who is responsible for deciding the constituency which will be reserved? So it is the delimitation commission। ठीक है। अभी ये फॉर्म हुई थी रिसेंटली, जिन्होंने 109 सीट्स टोटल अलाउट की थी टू द जम्मू एंड कश्मीर। Japan has a parliamentary system in which the monarch या king भी हमारा करेक्ट आंसर है। After the 91st Constitutional Amendment Act, the number of members of the Union or State Council of Ministers shall not exceed 15% of the total membership of the Lok Sabha or State Legislative Assembly. Who does the work of building a bridge between the Council of Ministers and the President? It is the Prime Minister, because Prime Minister is the head of government. Next question. Under which category of services does the Indian Forest Service foreign service comes? So it is a central service। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, अगर आपने मेरे पहले पॉलिटी की वीडियोस देखी हैं तो इन टर्म्स में और इन सारी चीजों में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल। नाउ 73 का करेक्ट आंसर है इट इज एन एग्जीक्यूटिव दैट सपोर्ट ऑन द मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। डी इज राइट। इन whom has the executive power of union has been actually vested? Actual में the executive power has been vested in the council of ministers। When was the 91st Constitutional Amendment Act passed to determine the maximum limit on the size of Council of Ministers? कब पास हुआ था ये? So it was passed in the year 2003। Where can a proposal to remove the vice president from his post be presented? तो ये प्रेजेंट हो सकता है हमारा ओनली इन राज्यसभा। राज्यसभा से दिस मोशन नीड्स टू बी पास विद द स्पेशल मेजोरिटी, वाइल राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में वो बिल जाएगा about the removal of vice president and it is needed to be passed by simple majority। In which article of the Indian Constitution special procedure is given for money bill? So money bill is given in article 110। ये हमारा करेक्ट है। 108 आर्टिकल tells us about joint sitting and article 112 is about annual financial statement या आप बजट बोल। हालांकि एक बात याद रखना कि the word budget is not mentioned in the constitution। मेंशन क्या है? मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। A money bill can introduce only in Lok Sabha? Yes. The Council of Ministers is answerable only to the Lok Sabha, not to the Rajya Sabha? Yes. दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। What is the draft of the law proposed in the legislature called? It is known as bill। Which method is included among the method of control over an executive by legislature under the parliamentary system? सिस्टम को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कंट्रोल भी होता है, ठीक है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266। पार्लियामेंट्री कमिटीज भी होती हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट मोशंस भी होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा टू सी वेदर द गवर्नमेंट एंजॉयज अ मेजोरिटी और नॉट। डिबेट्स एंड डिस्कशन भी होता है। तो 80 का हमारा डी हो जाएगा। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस 11th क्लास का all the questions of the NCERT। In the next lecture we will finish all the remaining questions। Till then keep studying। Thank you।